Good morning to all of you. तो आज डिस्कशन क्लास रे आमे मॉक टेस्ट नंबर 11 डिस्कस करिबा सेम 50 टा एमसीक्यू रहिबो एंड ईच एमसीक्यू एज यूजुअल मु जेमडी 10 टू 15 सेकंड समस्त को लाइव चैट रे अटेम्प्ट करिबा को टाइम दिए सेमती देबी जदि अजर्सन रीजन की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किसी डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छी ताहले 20 सेकंड्स भी मु देई पारे तो जहाँ भी असाइन्ड टाइम रहिबो मेक श्योर करिवे कि लाइव चैट रे जो माने भी ऑनलाइन अछंती समस्ते आंसर देबाकू आई होप समस्ते टेस्ट अपियर करुथिबे एंड जो मानकर ये टेस्ट पर्टिकुलर टेस्ट स्किप भी हो जाइए से माने भी ये डिस्कशन क्लास अटेंड करि परिबे एंड जहाँ भी किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ए क्लास रे प्रोवाइड हबो निज नोट्स रे ताको ऐड करिवे सो आई वुड हाईली एडवाइस कि समस्ते कॉपी पेन कि टैब जो माने जदी ई नोट्स नोथिबे से माने नै कि बसिबे बट बिफोर दैट मते टिके क्लियर कर दियंतु कि ऑडियो एंड जहाँ भी मु एटी स्क्रीन रे एनोटेट करूची गोटे पीडीएफ मु ओपन करिची मॉक टेस्ट रो सेटा क्लियर अछि कि नहीं सब किछि क्लियर अछि कि नहीं आई एम गिविंग 2 मिनिट्स और 90 सेकंड्स 1.5 मिनिट्स ओके जो माने भी ऑनलाइन अछंती केही जणे मते क्लियर कर देले चलिबो अदरवाइज आई विल सिंपली अज्यूम कि सब क्लियर अछि एंड आई विल गो थ्रू द डिस्कशन क्लास any one of you just make it clear कि ऑडियो वीडियो दीटा जाक क्लियर अछि कि नहीं मेनली ऑडियो ओके समस्ते एठी कहउचंती क्लियर अछि आमे क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आमे क्वेश्चन नंबर 1 देखिबा क्वेश्चन नंबर 1 कोन अछि क्वेश्चन नंबर 1 कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ओके स्टेटमेंट देइछि इट मेजर्स द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ करेंसी अगेंस्ट द यूएस डॉलर इट रिफ्लेक्ट्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एडिक्वेसी Statement number C, it indicates a country's trade competitiveness after adjusting for inflation. D, it shows capital inflow outflow balance. 10 seconds ଦଉଛି ମୁଁ नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और ईयर जोटा कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जदि इकोनॉमिक्स रे एटा कवर करथिबे ताले बेसिक स्टेटमेंट ही अछि डेफिनेशन रु ही तारा जानि परिबे सो आई एम गिविंग जस्ट 10 seconds starts now Answer number C. It indicates a country's trade competitiveness after adjusting inflation. रियर कौन मेजर करे रियर मेजर करे कि जो कंट्री रो जो करेंसी अच्छी तार वैल्यू एंड कहा संगे कंपेयर करी कि कंट्री रो करेंसी वैल्यू कहा संगे कंपेयर करी कि मेजर हुए गोटे बास्केट ऑफ करेंसीज ऑफ इट्स मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स ए कंट्री जहाँ भी धर कंट्री ए ट्रेड करुच्ची बी सी डी को संगे तो कंट्री ए रो करेंसी आंको तार जो वैल्यू रहिला बी सी डी
आंकर जो करेन्सी रही बास्केट ऑफ करेन्सीज अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेन्सीज ऑफ इट्स मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स आंकर करेन्सी सहित कंपेयर हम आंकर बास्केट ऑफ करेन्सी सहित कंपेयर होगी से कंट्री करेन्सी गोटे वैल्यू जो बाहर ताकू मेजर करा जाए रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सांगे okay and it is adjusted for inflation differentials inflation differentials ठीक अच्छी किंतु NER जोटा रहिला nominal effective exchange rate unlike this hence एटा जो रियल परचेसिंग पावर को रिफ्लेक्ट करे एंड ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को रिफ्लेक्ट करे जदि रियर अप्रिशिएट करिवो ताहले एक्सपोर्ट्स आकु नोट डाउन करिवे एटा एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन अछि एक्सपोर्ट्स कॉस्टलियर हबो एंड कॉम्पिटिटिवनेस डिक्रीज हबो एंड जदि रियर डिक्रीज करिवो बा डेप्रिशिएट हबो ताहले एक्सपोर्ट्स चीपर हबो आ जदि एक्सपोर्ट चीप हे गला ताहले कॉम्पिटिटिवनेस भी इंप्रूव हबो सो आंसर कोन हबो इट इंडिकेट्स कंट्रीज ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन ठीक अछि सो एठी हमें गोटे एंती लिखि परिबा कि रियर इक्वल्स टू नियर प्लस इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट and it shows the trade competitiveness. Okay. Question number 2. A rise in which of the following would most directly increase the demand of a country's currency in a floating exchange rate regime? Higher imports, capital outflows, increase in foreign investment inflows, expansionary monetary policy. Answer is C. Increase in foreign investment inflows. Question को पचारची a rise in which of the following आ भितर को जिनसटा rise हेले सेटा directly increase करिबो demand for a country's currency in a floating exchange rate regime. Floating exchange rate कौन floating exchange rate रे कौन हुए both demand and supply एमाने ही करेन्सी रो वैल्यू कौन हबो सेटा को डिसाइड करंती जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज रे जो हमर एफडीआई आउ एफपीआई रहिला माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माने फॉरेनर्स से मन को अधिका रु अधिका डोमेस्टिक करेन्सी दरकार सो एथरे कौन हुए डिमांड राइज करे and increase in demand leads to appreciation of currency ठीक अछि so capital inflows equals to increased demand for domestic currency. Question number 3. Under a fixed exchange rate system, a central bank prevents depreciation of its currency primarily by lowering domestic interest rates, buying foreign currency in the market, selling foreign exchange reserves, imposing export restrictions.
प्रीवियस क्वेश्चन रे हमें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम देखिले क्वेश्चन रे एठी मेंशन है जे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अंडर रे कोन हुए सेंट्रल बैंक ही गोटे टारगेट रेट से मेंटेन करे सेंट्रल बैंक टारगेट रेट मेंटेन करे किंतु फ्लोटिंग रे कोन होतला जो मार्केट रो जो डिमांड और सप्लाई अछि ता द्वारा ही करेंसी रो वैल्यूटा डिसाइड होतला सो एठी कोन हबो इफ डोमेस्टिक करेंसी टेंड्स टू डेप्रिशिएट जदि डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हबा को लागे ताहले सेंट्रल बैंक कोन करे इट सेल्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड बाइज डोमेस्टिक करेंसी तो एथिरे कोन हबो डिमांड इंक्रीज हबो एंड वैल्यू भी स्टेबलाइज हबो ठीक अछि आंसर कोन हबो सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स question number 4 which historical system collapsed primarily due to Triffin dilemma gold standard European monetary system Bretton Woods system Smithsonian agreement 10 seconds starts now answer is C Bretton Woods system Triffin dilemma kono US had to supply dollars for global liquidity kintu excessive dollars reduced confidence in dollars gold convertibility what is Triffin dilemma US had to ताको सप्लाई करिवार थिला डॉलर्स फॉर ग्लोबल लिक्विडिटी किंतु एक्सेसिव डॉलर्स हे जिबारु डॉलर रो जो गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी थिला सेटा सेतरे कॉन्फिडेंस रिड्यूस हला एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन लेड टू कोलैप्स ऑफ ब्रिटेन वुड्स ओके सो यूएस कौन कला से सस्पेंड कला डॉलर को फाइनली गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी इन 1971 question number 5 India's present exchange rate regime can best be described as free floating exchange rate crawling peg system managed floating exchange rate fixed basket peg system answer of C actually managed floating exchange rate इंडिया मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट फॉलो करे जोटा मु कहली जोटा डिमांड एंड सप्लाई द्वारा रेगुलेटेड सो आरबीआई भी ओकेजनली एथरे इंटरवीन करे ठीक अछि टू प्रिवेंट एक्सेसिव वोलाटिलिटी आरबीआई आल्सो इंटरवीन्स आ जदि एठी किछि गोटे कंडीशन थांते कि आरबीआई इंटरवीन करि परिबोनी केवल मार्केट डिटरमाइंड ही रहइबो ताहाले ताको कहि थांते फ्री फ्लोटिंग दिस इज नॉट फ्री फ्लोटिंग आरबीआई डज इंटरवीन नॉट फ्री फ्लोट सो आरबीआई इंटरवीन कोथि पई करे कि एक्सेसिव वोलाटिलिटी को प्रिवेंट करिया पई आ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करिया पई नो फिक्स्ड टारगेट और बैंड सेमति किछि गोटे फिक्स्ड टारगेट की बैंड किछि गोटे दिया जायनी fixed target hence eta को गोटे managed float कुआ जाउछि not free float crawling peg system अछि crawling peg system भी हबनी काइना कोनोसी प्री अनाउंस्ड किछि भी दिया जायनी एठी आगुरु अनाउंस हबो नो फिक्स्ड करेंसी बास्केट तो नो ही काइना फ्लोटिंग अछि आंसर हबो सी Question number 6. Which of the following instruments is primarily used by RBI to sterilize excess liquidity arising from forex inflows?
Repo rate, market stabilization scheme, cash reserve ratio, standing deposit facility. Answer is B, market stabilization scheme. Forex inflows माने कौन कि आरबीआई डॉलर आणुची बाइज डॉलर्स तो जेतेबेले डॉलर आणुची से ता एक्सचेंज रे भी किछि दउथिबो रिलीजेस रुपीज ठीक अछि जेतेबेले एक्सेस लिक्विडिटी हे जाए सो एक्सेस लिक्विडिटी हैला टू स्टेरिलाइज एंड ए जो एक्सेस लिक्विडिटी कंडीशन टा क्रिएट हैला आको अब्सॉर्ब केमिति करिवो स्टेरिलाइज केमिति करिवो ए जो एक्सेस रुपी लिक्विडिटी को आरबीआई यूजेस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम एमएसएस एमएसएस अंडर रे कोन हुए आरबीआई मार्केट को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बा टी बिल्स जी6 बा टी बिल्स रिलीज करे इश्यू करे एंड एथिरे जो टंकाटा आसीबो ताकू रखिया पई प्रोसीड्स आर केप्ट गोटे सेपरेट एमएसएस अकाउंट भी क्रिएट हुए एंड जो टी बिल्स इश्यू करके बिल्स जो माने किनिबे से माने मनी ऑब्वियसली देबे आरबीआई को एंड ए अकाउंट रे सेटा मेंटेन हेकि रहइबो एंड ए जो मनीटा रहिला एमएसएस पई कि सेटा एक्सपेंडिचर पई कि यूज हुएनी ओनली liquidity absorption it is not used for expenditure only liquidity absorption so answer is B market stabilization scheme. In the context of exchange rates, overshooting refers to persistent overvaluation under fixed regimes, excessive short-term volatility beyond long-run equilibrium, continuous depreciation due to inflation differentials, capital account convertibility. 10 seconds दउची मु आर आंसर करबा को ओवरशूटिंग माने कोन excessive short term volatility beyond long run equilibrium option number B overshooting केतबळे हुए जेतबळे exchange rate जो रहिला सी it reacts more sharply in the short run exchange rates react sharply in the short run and जो long run equilibrium level रही ता ऊपर को भी सेटा पळाए moves beyond that and एटा कोथरे explain हेजी it is explained by the Dornbusch overshooting model and एटा common कहा अंडर रे जो floating exchange rates जो कंट्रीज रे चलची ता पई सडन मॉनेटरी और कैपिटल शॉक्स रे ए जिंसटा कॉमन सो ओवरशूटिंग रेफर्स टू एक्सेसिव शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी बियॉन्ड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम Question number 8. Which of the following is a direct inflationary channel of currency depreciation in India? Increase in service exports, rise in oil import prices, growth in tourism receipts, increase in remittance inflows. Answer number B. Rise in oil import prices. Currency depreciation हेले कौन हबो
imports become costlier. And India कौन कौन import करुची? India हमरो crude oil import करुची. Crude oil, fertilizers, edible oil. So oil price higher ହେଇଗଲେ कौन हबो? Transporting cost बढ़ी जिवो. Oil price, transport cost बढ़ीगला, then production cost भी बढ़ियो. And so एटा कौन क्रिएट करिवो? गोटे cost push inflation क्रिएट करिवो. ठीक अछि. So answer हबो rise in the oil import prices. Question number 9. The primary objective of RBI's foreign exchange intervention is to maintain a fixed exchange rate, target a specific real value, eliminate trade deficit, curb excessive volatility in the forex market. Nine rubber D. Curb excessive volatility in the forex market. RBI कौन target करेनी? RBI does not target fixed exchange rate, गोटे specific real value. आरबीआई केतबेले इंटरवीन करे एंड कौन पे इंटरवीन करे कि जो शार्प मूवमेंट्स रही मार्केट रे ताकू केमती स्मूदन आउट करिवो. आरबीआई इंटरवेन्स टू स्मूथ द शार्प मूवमेंट्स. डिसऑर्डरली जो मार्केट कंडीशंस रही ताकू सेति भी सी इंटरवीन करे. सो दिस अलाइंस विथ इंडियाज मैनेज्ड फ्लोटिंग रेजिम. ओके, to curb excessive volatility in the forex market. एथिपाई RBI intervene करे. ऊपर गोटे question रे भी as it is discuss ହେଇची. Question number 10. Which episode clearly demonstrated India's vulnerability under a pegged exchange rate system? Asian financial crisis 1997, global financial crisis 2008, balance of payment crisis 1991, COVID-19 pandemic 2020. Answer is C. Balance of payment crisis 1991. 1991 आगु कौन होतला? इंडिया गोटे पेग्ड एक्सचेंज रेट फॉलो करूतला. सो persistent current account deficit रहूतला before pegged exchange rate. and तार रिजल्ट कौन हैला कि जो फॉरेक्स रिजर्व थिला से एते कम हे गला कि लास्ट को 2 वीक्स रो इंपोर्ट ही अफोर्ड करि परिबा पई कि फॉरेक्स रिजर्व्स थिला ता माने ओनली 14 डेज पई थिला. सो इंडिया को गोल्ड दबा को पहला इंडिया हैड टू प्लेज गोल्ड. तो ए सबु जो हैला आर रिजल्ट कौन थिला? आर रिजल्ट थिला कि इट लेड टू devaluation of currency and shift towards market determined exchange rate जोटा कि एबे managed floating exchange rate जोटा maintain होजी.
Question number 11. Consider the following statements regarding the impossible trinity, Mundell Fleming trilemma jahaku kuhajaye. A country cannot simultaneously maintain a fixed exchange rate, free capital flows, and independent monetary policy. Second statement, floating exchange rate allows greater monetary policy autonomy. Third statement, capital control can help reconcile fixed exchange rate with independent monetary policy. Avidru koda correct abo? Which of the statements given above are correct? 1 only, 1 and 2 only, 1, 2 and 3, 2 and 3 only. Answer is C. 1, 2 and 3. Statement 1 कहला कि country simultaneously गोटे fixed exchange rate, free capital flows and independent monetary policy को maintain करि परिबनी. So it is correct. आउ एटा ही होची core proposition of impossible trinity. कंट्री केवल दीटा ही चूज करि परिबो आउट ऑफ 3. इधर से ए दीटा हो कि ए दीटा हो कि ए दीटा हो. Statement 2 कहला कि floating exchange rate allow greater monetary policy autonomy. It is also correct. Floating exchange rate उपरे discuss ହେଇଛି ଗୋଟେ question रे. Floating exchange rate रे कौन हुए कि central bank तार किछि दरकार नथाए ଗୋଟେ target rate set करिया पई कि defend करिया पई. Interest rate can be adjusted based on the domestic condition माने inflation growth की demand supply. तो एटा भी ठीक अछि. Statement number 3 capital तो एटा भी करेक्ट अछि. कैपिटल कंट्रोल सेटा फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल को रेस्ट्रिक्ट करूची एंड एटा अलाउ करे कि फिक्स एक्सचेंज रेट एंड इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी. एग्जांपल की एग्जांपल आर चाइना हिस्टोरिकली. ट्रिलेमा कोन? ट्रिलेमा माने ही होची एठी जो ट्रिलेमा देला ट्रिलेमा माने ही होची पिक ओनली टू फिक्स्ड रेट और फिक्स्ड कैपिटल बा मॉनेटरी ऑटोनॉमी भितर दीटा. आंसर अब 1, 2 and 3. All of them are correct. 12. Which of the following transaction is recorded under the primary income account of the current account? Remittances from Indian working abroad, export of software services, interest payment on external debt, import of crude oil. Answer is C. Interest payment on external debt. Primary income रे कौन include हुए? It includes income from the factors of production. Primary income रे factors of production include हुए in the interest हला, dividend, profits, wages and जो बाहर जो डेट निया हेता है लोन निया हेता है आ ता ऊपर जो इंटरेस्ट टा पेमेंट हुए एटा होची इनकम पेड टू फॉरेन कैपिटल. प्राइमरी इनकम डेबिट. सो आंसर अब इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एक्सटर्नल डेट.
Question number 13. A sustained capital account surplus exceeding the current account deficit in India would most likely result in rupee depreciation, decline in forex reserves, overall BOP, money balance of payment surplus, rise in current account deficit. Answer is C. Overall BOP surplus. Balance of payment identity. Sustained capital account surplus exceeding the current account deficit in India would most likely result in the overall BOP surplus. Balance of payment identity ame kemti etti mention kari pariba. Current account plus capital account plus errors and omissions equals to 0 ହେଇଗଲେ ଏଟା ହଉଛି balance of payment ଏଟାର identity. ଯଦି capital account exceeds the CAD ତାହେଲେ କଣ ହବ? Excess inflows add to forex reserves. Forex reserves. And the result कौन? BOP surplus. Overall BOP surplus. So एठी हमें कौन जान ले? Capital surplus greater than CAD. It leads to forex reserves rise. Which of the following best explains the term errors and omissions in the balance of payment? Government's unreported financial fiscal transfer, RBI's foreign exchange interventions, statistical discrepancies due to unrecorded transactions, capital account liberalization measures. Answer is C. Statistical discrepancies due to unrecorded transactions. Errors and omissions जो account रहिला they exist because कना किछि transaction note कला बेले किछिटा miss हो जाए missed timing difference थाए and misreporting भी include थाए and it ensures कि जो balance of payment अच्छी सेटा balances arithmetically. So statistical discrepancies due to unrecorded transactions. Just a second. India's current account deficit narrowed sharply during the COVID-19 period, mainly due to surge in capital inflows, decline in gold and oil imports, rise in outward FDI, expansionary fiscal policy. Answerable B. Decline in gold and oil imports. India's current account deficit COVID-19 रे narrow ହେଇଗଲା sharply due to the decline in gold and oil imports. COVID-19 रे कौन हैला जो global economic activity थिला सेटा collapse ହେଇଗला एटा समस्त जानचंदी. Oil demand भी decrease ହେଇଗଲା and sharply decrease ହେଲା. Crude prices भी decline ହେଇଗଲା. Gold imports also reduced due to lockdowns and weak demand. Since jehetu gold and oil
जोड़ा कि मेजर इंपोर्ट आइटम्स ऑफ इंडिया डिक्लाइन हैला, सो इंपोर्ट बिल भी लो हैला, इंपोर्ट बिल, सो नैरो CAD बा करंट अकाउंट डेफिसिट. Which of the following inflows is considered the most volatile source of financing India's current account deficit? Foreign direct investment, workers' remittances, foreign portfolio investment, external assistance. 10 seconds starts now. Answer is C. Foreign portfolio investment. FPI. As compared to FDI, FPI hochi kono? Eta hochi short term. And this is also highly sensitive. Highly sensitive to what? Highly sensitive to global interest rates, risk sentiment, ଆଉ geopolitical events. So FPIs can exit suddenly. ताकू कौन कहा जाए? Hot money. किंतु FDI सदा suddenly जाई परिबेनी, but question only asking for FPI, so एटा कौन हबो? Foreign portfolio investment हबो आर आंसर. FDI कौन? FDI होची as compared to FPI, it is stable and long term. The most volatile capital flow कौन? Foreign portfolio investment. In the BPM6 framework, migrants transfers are recorded under which account? Current account, secondary income, capital account, financial account, reserve account. Answer about B, capital account. Under BPM6, जो migrants मानकर transfers रहिला, they represent transfer of assets when a person changes residence. तो आपको ट्रीट करा जाए as a capital transfer, not income flow. Treated as capital transfer. Not income flow. Earlier pre BPM6 आगु कौन थिला? किछि countries ताको differently record करुथिले. So it is recorded under the capital account. Question number 18. Which of the following indicators is most commonly used to assess the sustainability of India's current account deficit? CAD to fiscal deficit ratio, CAD as a percentage of GDP, forex reserves to GDP ratio, trade deficit to export ratio.
Answer is B. CAD as a percentage of GDP. CAD to GDP से कौन शो करे कि जो एक्सटर्नल इम्बैलेंस रिलेटिव टू इकोनॉमिक साइज इट शोज imbalance relative to economic size. Internationally accepted benchmark कौन CAD less than or equal to 2 to 2.5% of GDP हवा दरकार जनरली एटा सस्टेनेबल फॉर इंडिया सो की CAD सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक होची CAD टू GDP रेशियो as CAD as a percentage of GDP. Which policy measure directly aims at reducing India's balance of payment pressure by curbing non-essential imports? Liberalized remittance scheme, market stabilization scheme, gold monetization scheme, FCNR, B deposits. आंसर हम सी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम. गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम रे कौन हुए कि जो आइडल डोमेस्टिक गोल्ड घरे जोटा पड़ी रही ताकू मोबिलाइज करा जाए. ताकू मोबिलाइज करा जाउची. तो एटा गोल्ड इंपोर्ट्स रो जो डिपेंडेंस रही ची इंडिया रे इट रिड्यूसेस दैट. गोल्ड इंपोर्ट्स सिंस गोल्ड गोटे मेजर नॉन एसेंशियल इंपोर्ट तो जीएमएस जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम रहिला इट हेल्प्स टू ईज द बीओपी प्रेशर बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर. ओके सो रिड्यूसिंग गोल्ड इंपोर्ट्स गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एमती मन रखिबे. The assumption of the title Maharaja Dhiraja by Chandragupta I, Chandragupta, primarily signified his performance of the Ashwamedha sacrifice, his conquest of Dakshinapatha, assertion of imperial sovereignty over subordinate rulers, establishment of a theocratic state. Answer number C, assertion of imperial sovereignty over subordinate rulers. Chandragupta first से first Gupta ruler थिले जे कि ए टाइटल महाराजा धीराज assume करिथिले assume the title of assumed the title of महाराजा धीराज. महाराजा धीराज माने कोन king of kings. किंग ऑफ किंग्स एंड ए जो टाइटलटा तांकर थिला से तांकर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को सिग्निफाई करूथला ओवर द लेसर किंग्स इंपेरियल सोवरेंटी और political supremacy over the lesser kings. तो एटा गोटे ट्रांजिशन मार्क कला फ्रॉम अ रीजनल पावर टू imperial authority. It symbolizes overlordship, not a specific military campaign. क्वेश्चन स्टेटमेंट ए कहितला कि अश्वमेध सैक्रिफाइस एटा इनकरेक्ट हबो काहे ना एटा बहुत परे परफॉर्म हैला बाय समुद्रगुप्त एंड दक्षिण पथ कन्क्वेस्ट इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिम. आंसर हबो सी एस्टाब्लिशमेंट ऑफ थियोक्रेटिक स्टेट एटा भी नो गुप्त स्टेट एटा सेक्युलर मोनार्कियल थिला नॉट थियोक्रेटिक. कोन थिला सेक्युलर मोनार्कियल. Samudragupta's southern campaigns are best described as territorial annexations followed by direct administration, tributary conquests without
permanent occupation, religious missions aimed at Vaishnavism, defensive wars against Hun invasions. Your 10 seconds starts now. Option number B, tributary conquests without permanent occupation. समुद्रगुप्त से गोटे dual conquest policy को follow करुଥିଲେ जोथरे कि North India was for annexation and South India जोटा को दक्षिण पथ कुहा जाउतला for defeat, reinstatement and tribute. आज जो सदर्न रूलर्स थिले से माने गुप्ता सुजरेनिटी को एक्सेप्ट करथिले, दे एक्सेप्टेड द गुप्ता सुजरेनिटी, दे पेड द ट्रिब्यूट, वे आर नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड. 22, द प्रयाग प्रशस्ति और समुद्रगुप्त वाज कंपोज्ड बाय कालिदास, अमरसिंह, हरिसेना, विशाखदत्त. आंसर नंबर सी, हरिसेना. प्रयाग प्रशस्ति, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन. inscription रे अछि एटा गोटे कोट यूलोजी ऑफ समुद्रगुप्त एंड इट वाज रिटन इन संस्कृत प्रोज एंड वर्स. हरिसेना से कोट पोएट थिले एंड से गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी हेल्ड करथिले. Question number 23. The introduction of silver coinage in the Gupta period is most closely associated with Samudragupta's southern campaign, Kumaragupta's foundation of Nalanda, Chandragupta II's, Chandragupta II's conquest of the western satraps, Skandagupta's victory over the Hunas. Answer number C. Chandragupta II's conquest of the western satraps. Chandragupta II, he defeated the western kshatrapas and एटा जो सिल्वर रिच रीजन थिला ताका एक्सेस अंडर रे आनला एक्सेस ऑफ सिल्वर रिच regions. Okay, and influence of Indo-Greek monetary tradition. So result कौन हैला, silver coins introduce हैला alongside the gold dinars.
Question number 24. Which of the following officials acted as the chief officer for war and diplomacy in the Gupta administration? Mahamatra, Senapati, Uparika, Sandhi Vigrahika. Sorry. Answer number D. Sandhi Vigrahika. Sandhi Vigrahika से कौन करते? They handled peace माने संधि and war माने विग्रह. की ऑफिसर अपॉइंट होते फॉर फॉरेन रिलेशंस, ट्रीटीज, डिप्लोमैटिक नेगोशिएशंस एटसेट्रा. संधि विग्रहिका कौन से वॉर आउ डिप्लोमेसी को हैंडल करथुले. Question number 25. The land grants made during the Gupta period most significantly contributed to complete abolition of land tax, centralization of revenue collection, emergence of feudal tendencies, decline of agricultural productivity. आंसर अब सी इमर्जेंस ऑफ फ्यूडल टेंडेंसीज. गुप्त जो लैंड ग्रांट्स थिला माने अग्रहरस बा ब्राह्मदेयस, दे ग्रांटेड लैंड रेवेन्यू राइट्स टू ब्राह्मण्स एंड ऑफिशियल्स. जेतेबेले लैंड रेवेन्यू राइट्स माने अलगा लोकों को ग्रांट करदेले, इट रिड्यूस द डायरेक्ट स्टेट कंट्रोल. Direct state control over land. Okay, so this led to the rise of intermediaries, decentralization of authority, and proto-feudal features. Okay. Question number 26. Which one of the following best reflects the distinctive feature of the Gupta gold coinage? Exclusive religious symbolism, absence of royal portraits, high purity and diverse iconography, predominant use of foreign trade only. आंसर अब सी हाई प्यूरिटी एंड डाइवर्स आइकोनोग्राफी. जो गुप्तांकर जो ओल्ड कॉइन्स थिला और दिनार्स, दे आर नोन फॉर कहीं ना गोल्ड रो प्यूरिटी बहुत हाई थिला, वेरी हाई गोल्ड प्यूरिटी, रिच आइकोनोग्राफी माने आर्चर्स थिले, लिरिसिस्ट थिले, हॉर्समैन, अश्वमेधा टाइप. कंसिडर्ड द फाइनेस्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया. द फाइनेस्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया. The Chinese pilgrim Fa Heng's account of Gupta India primarily highlights severe taxation and forced labor, decline of Buddhism, prosperity and mild administration, extensive canal-based irrigation. Answer is C. Prosperity and mild administration. Fa Heng जी इंडिया को विजिट करथिले during the Chandragupta's second regime. He notes कि सेतबेले लाइट टैक्सेशन चलतिला. Taxation, rare use of corporal punishment, and general prosperity. So it indicated a benign state.
सो फाहिन को अकाउंट रे इटा इलिस्ट्रेट बा हाइलाइट हेची कि सेतबेले प्रॉस्पेरिटी थिला आ माइल्ड एडमिनिस्ट्रेशन थिला आ प्रॉस्पेरस सोसाइटी कैरी आउट होतला विथ माइल्ड लॉज. Question number 28. The earliest surviving structural Hindu temple of the Gupta period is Kandariya Mahadeva Temple, Shore Temple Mahabalipuram, Dashavatara Temple Deogarh, Brihadeshwara Temple. Answer is C. Dashavatara Temple Deogarh. Dashavatara Temple seta kebe establish heitla early 6th century CE. Style hochi Nagara type, and it is dedicated to Lord Vishnu. It represents transition from rock cut to structural temples. Question number 29. The resistance against early Hun invasions was most successfully led by Kumaragupta I, Skandagupta, Chandragupta II, Samudragupta. आंसर होगा स्कांदगुप्ता. स्कांदगुप्ता से सक्सेसफुली हुन इन्वेजन को रिपेल करथिले. Then restored the Gupta prestige temporarily. तांकर जो रियाइन थिला it marked last major Gupta military success. So Hun resistance संगरे किए associated स्कांदगुप्ता थिले. 30. Article 12 of the Constitution is primarily significant because it grants equality before law to citizens, defines the scope of judicial review, determines against whom fundamental rights are enforceable. Option number D 80 provides remedies for enforcement of rights. Previous class रे भी एटा discuss हेची. एटा हबो actually C. It determines against whom fundamental rights are enforceable. माने एटा define करे state under रे किए किए आसीबे. Fundamental rights जोटा part 3 of the constitution are enforceable only against state, not purely private bodies. किछिटा exception अछंती जेमती article 15 clause 2 हमर हला. ठीक अछि. Question number 31. Which one of the following bodies would most likely qualify as state under Article 12 based on the judicial tests? A privately owned unaided school, a government controlled cooperative society, a religious trust with charitable activities, a private media company. Answer above B. A government controlled cooperative society. Supreme Court tests deep and pervasive. State control, financial, functional, administrative dominance, and जो government control cooperatives रहिले often satisfy these tests. So a government control cooperative society, option number B will be the correct answer. Question number 32. Under Article 13 Clause 1, a pre-constitution law inconsistent with the fundamental rights is completely void ab initio, void only after a court declaration, void to the extent of inconsistency, automatically repealed. Answer is C. Void to the extent of inconsistency. जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज रहिला दे आर नॉट रिपील्ड. तांको रिपील करा जाय नाही. प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज आर नॉट रिपील्ड.
they become inoperative only where inconsistent. जोटी से माने inconsistent proof हेबे सेठी से माने को inoperative कर दिया जिबो से मानो totally repeal करा जाय नै. So here the doctrine of severability applies. आपको कहा जाए doctrine of severability. So article 13 clause 1 partial uh, invalidity, void to the extent of inconsistency. Question number 33. The doctrine of eclipse primarily applies to post-constitutional laws violating fundamental rights, constitutional amendments, pre-constitutional laws inconsistent with fundamental rights, emergency provisions. Answer about C. Pre-constitutional laws inconsistent with fundamental rights. Such laws are actually not dead, merely eclipse or shadowed. ଯେତେବେଳେ fundamental right amend ହବ they revive if the fundamental right is amended or removed. Eclipse माने ही होची कि जो shadow on pre-constitution law. Question number 34. Which principle was introduced by the Supreme Court to expand the scope of Article 14 beyond classification? Basic structure doctrine, doctrine of waiver, doctrine of arbitrariness, doctrine of severability. Answer about C. Doctrine of arbitrariness. Eta Supreme Court of India अंक द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाइछि. Article 14 it now prohibits arbitrary state action even without unequal classification. Question number 35. Article 15 clause 2 is unique because it applies only to state action, allow reasonable classification, is enforceable against private individual as well, applies only to employment. 10 seconds starts now. Answer number C is enforceable against private individuals as well. Article 15 clause 2 it prohibits discrimination in access to shops, hotels, wells, roads, etc. And it is applicable both for state and private individuals. So article 15 clause 2 ro आर होची horizontal application. Remember this. Reservation in promotion for SC/STs in public employment is constitutionally enabled by Article 16 Clause 3, Article 16 Clause 4, Article 16 Clause 4A, Article 16 Clause 6. Answer number C. Article 16 4A. Eta insert kara jaitla specifically to allow reservation in matters of promotion of SCs and STs जदि सेमानंकु कोनोसी सर्विस रे adequately represent करा जाई नथिबो. Earlier article 16 4 रे कोन होतिला it allowed reservation in initial recruitment.
initial recruitment. Kintu it was interpreted by court as not permitting reservation in promotion. So Article 16 Clause 4A re kon hela, it provides the specific constitutional basis for reservation for promotion in promotion of SCs and STs. Question number 37. The abolition of untouchability under Article 17 differs from Article 14 to 16 because it applies only to scheduled castes, is enforceable only through writs, applies against both state and private individuals, is a non-justiciable right. Answer number C applies against both state and private individuals. Article 17 it abolishes untouchability, also mentioned in the question, and its practice in any form. कौन से इनडायरेक्टली भी अनटचेबिलिटी केही प्रैक्टिस करि परिबिनी अनलाइक जो बाकी फंडामेंटल राइट्स रहिला 14 टू नेकी 16 14 15 16 व्हिच आर एनफोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट, ओनली स्टेट अगेंस्ट एनफोर्सेबल हेई परिबे किंतु आर्टिकल 17 इट एक्सटेंड्स टू ऑल पर्सन्स and prohibits private actions that account to untouchability. Therefore untouchability it prohibit kara jayche beyond just state conduct. Article 17 covers both state and private individuals. Question number 38. Which of the following is constitutionally permissible under Article 18? Conferring hereditary titles, acceptance of foreign titles by citizens, award of military honors, use of honorifics like Rai Bahadur. Answer is C. Award of military honors. Article 18 एटा प्रोहिबिट करे कि कौनसी प्रकार ऑनरिफिक हेरिडिटरी टाइटल्स दिया जाई परिबनी. फॉरेन टाइटल्स जदि काहाकू दिया जाउची विदाउट गवर्नमेंट रो कंसेंट ताकू भी दिया जाई परिबनी. यूज ऑफ टाइटल्स इम्प्लाइंग प्रिविलेज एगुडी किछि हेई परिबनी. किंतु किछि ऑनररी डिस्टिंक्शन अछि जेमति कि मिलिटरी ऑनर्स हे गला बा सिविलियन अवार्ड्स. Civilian awards hela, they are not just titles in a prohibited sense and are constitutionally permissible. Segudika diya jai pariba. Therefore, military honors can be conferred. Article 18 it bans only the title of nobility jo rahila, kintu jo honorary honors rahila jemti ki military medals hela segudika prohibited nuhe under re. So award of military honors, option number C is the correct answer. The VBG RAM-G bill passed in December 2025 is best described as a rebranding of PM Kisan scheme, a replacement of Manrega with enhanced rural employment guarantees, a direct benefit transfer scheme for farmers, a skill development program for migrant labor.
आर फुल फॉर्म कौन? विकसित भारत ग्यारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 ए बिलटा से इंट्रोड्यूस होइतला तार फुल फॉर्म होची एटा एंड एटा काहा को रिप्लेस करची? रिप्लेसेस द एमजी नरेगा मनरेगा. Okay, and it provides a statutory guarantee of 125 days of wage employment per rural household up from 100 जोटा आगुरु 100 थिला at introduces structural and funding changes and ए जो focus टा रहिला it will focus on livelihood security, stronger planning plus asset creation. केवल गोटे खाली गोटे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की रेमिटेंस स्कीम एटा नुहे ए सब ऊपर भी तार फोकस रहिबो. सो दिस इज अ न्यू रूरल जॉब गारंटी रिप्लेसिंग द एमजी नरेगा. आंसर हबो बी, ए रिप्लेसमेंट फॉर दिस विथ एनहांस्ड रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज. The Sabko Bima Sabko Raksha Bill is significant primarily because it nationalizes the insurance sector, abolishes reinsurance in India, liberalizes FDI norms in insurance up to 100%, introduces universal health insurance. Answer number C. Liberalizes FDI norms in insurance up to 100%. सबका बीमा सबका रक्षा एटा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज बिल 2025 ये इंश्योरेंस एक्ट, LIC एक्ट एंड IRDAI एक्ट आपको अमेंड करिछि एंड जो FDI रो लिमिट थिला इन इंश्योरेंस सेक्टर from previously capped level ताको increase करिकी 100% करिछि enabling full foreign ownership. In Indian insurance companies and ए जो reform टा आसीछि it aims to deepen the insurance market and attract global capital and expertise. सबका बीमा सबका रक्षा बिल it is 100% गोटे FDI liberalizations in insurance sector. 41. The newly created higher education regulator VABSA was formed by merging UGC, UPSC and AICTE, UGC, AICTE and NCTE, NCTE, NCRT and UGC, AICTE, NAC and NIRF.
आंसर अब बी यूजीसी एआईसीटीई एंड एनसीटीई. विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 ये प्रपोज करछि गोटे सिंगल रेगुलेटरी अम्ब्रेला क्रिएट करा जाऊ फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड एटा रिप्लेस करिवो जोटा क्रिएट करा जायछि एटा रिप्लेस करूछि काहाकू यूजीसी एआईसीटीई माने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इन वन यूनिफाइड regulator. 42. India's nominal GDP ranking as of December 2025 places it third globally, fourth globally, fifth globally, sixth globally. Answer about fourth globally. According to IMF, World Economic Outlook, India is the fourth largest nominal GDP globally. Question number 43. According to the World Inequality Report cited, India's top 1% holds approximately 25% of national income, 30% of national wealth, 40% of national wealth, 58% of national income. Answer about C, 40% of the national wealth. 2025 Stanford. Good second. Sorry. 40% of national wealth. Okay. Eta mu 44 ro explain korthili. 2026 World Inequality Report. Eta show karchi reports are very important for prelims. Okay. Top 1% of Indians, they hold about 40% of total wealth, highlighting the extreme wealth concentration. India's ranking in the Stanford AI Competitiveness Index was first, second, third, and fifth. Answer above C, third. 2025 Stanford Global AI Vibrancy Index. तो इंडिया रैंक कौन आसी इंडिया रैंक आसी थर्ड ग्लोबली इन एआई कॉम्पिटिटिवनेस बिहाइंड फर्स्ट कहार रैंक अच्छी फर्स्ट यूएसए देन चाइना देन इंडिया in AI competitiveness, artificial intelligence competitiveness. The inscription of Deepavali by UNESCO in December 2025 relates to its recognition as World Heritage Site, Cultural Landscape, Intangible Cultural Heritage, Memory of, just a second, Memory of the World. 10 seconds starts now.
Question number 45 ର answer କ'ଣ ହେବ? Answer ହେବ intangible cultural heritage. December 2025 दीपावली और दिवाली एटा यूनेस्को रे इनस्क्राइब ହେଇଛି as an intangible cultural heritage recognizing its cultural significance and traditions. Okay. Then question number 46. Operation Ditwa Sahayata was launched by India to provide military training assistance to Maldives, earthquake relief to Nepal, cyclone relief assistance to Sri Lanka, flood aid to Bangladesh. Your 10 seconds starts now. Answer haba C. Cyclone relief assistance to Sri Lanka. Operation eta kono? Ditwa Sahayata. এটা ইন্ডিয়া দ্বারা লঞ্চ করা যাইছি as a humanitarian assistance following a cyclone in Sri Lanka. Question number 47. Citizens were advised during the Cyber Safety Campaign 2025 to report cyber fraud immediately through which helpline? 112, 1091, 155260, 1930. Your 10 seconds starts now. आंसर बी 1091. साइबर सेफ्टी कैंपेन रे सिटीजन माननकु एडवाइस करागला कि जहाँ भी साइबर फ्रॉड से माने नोटिस करिवे तो से माने 1091 हेल्पलाइन रे कांटेक्ट करिकी डायरेक्टली इमीडिएटली से माने रिपोर्ट करि परिबे. एटा गोटे डेडिकेटेड हेल्पलाइन फॉर साइबर इश्यूज. Odisha aims to achieve how much green energy capacity by 2030? 5 gigawatt, 8 gigawatt, 11 gigawatt, 15 gigawatt.
11 gigawatt. ओडिशा अनाउंस करछि तार टार्गेट कोन कि से 11 gigawatt ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी अचीव करिवो बाय 2030 अंडर इट्स रिन्यूएबल एनर्जी रोड मैप. So target mane rakhibe 11 gigawatt. The traditional tribal wall painting edital is associated with which tribe of Odisha? Dongriya Kond, Bonda, Sora, Juang. 10 seconds starts now. Answer about Sora tribe. Sora tribe Odisha ru they are known for this type of painting. Edital wall painting जोटा कि डिपिक्ट करे mythological और tribal motifs. Mythological and tribal motifs and are integral to their cultural expression. Last question. Question number 50. The Sukinda Ecorace Conservation Project focuses on reviving which species? Muga silkworm. Option number B. Iri silkworm. Option number C. Trivoltine tussar silkworm. Mulberry silkworm. Sukinda Ecorace Conservation Project को species को revive करिबा उपरे focus करूचे. Answer about C. Trivoltine tussar silkworm. सुकिंदा इकोरेस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट तार एम होची कि केमिति से कंजर्व और रिवाइव करिवो ए पर्टिकुलर सिल्कवर्म स्पीसीज को. एटा गोटे वैल्यूएबल इंडिजिनियस सिल्क स्पीसीज. तो आज 50टा क्वेश्चन आमे कंप्लीट करिचे. जो मैंने टेस्ट दे ना आई विल हाईली एडवाइस कि समस्त टेस्ट रेगुलरली दियंतु. जो मैंने दे ना टेस्ट से मैंने भी डिस्कशन क्लास को अटेंड करि परिबे. जो मैंने लाइव देखि ना रिकॉर्डेड भी ताकू देखि परिबे. एंड रिकॉर्डेड रे भी डू ट्राई टू फर्स्ट आंसर द क्वेश्चन ऑन योर ओन. मुझे असाइंड टाइम दोची पर क्वेश्चन 10 सेकंड्स की 15 सेकंड्स हे गला. देन डिटेल रे तो डिस्क्राइब हो जे ही. So okay, so that is it for today. Thank you. Have a good day.